In the last class, we have discussed about, just let me share the screen first. Okay, you can see here now. We talk about this tree pruning, right? And in the tree pruning, we discuss about pre-pruning and then post-pruning, right? And we have found that post-pruning is better because it considers full data structures first and removes only the unnecessary branches. So we should note it that post pruning is better and it is considered as more accurate and stable, and it generally reduces overfitting. Okay, that's just a minute. Okay, so you have got it, the post pruning and pre pruning हमने डिस्कस कर लिया था. Next, कार्स ऑफ डायमेंशनलिटी डिस्कस किया था. जब डायमेंशनलिटी बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपका डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स का लोकेट कर, मतलब डेटा पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्स हो जाते हैं, राइट. सो जैसे कि एक एग्जांपल आप देख सकते हो, लो डायमेंशन के लिए क्लियर कास्ट क्लस्टर यू कैन सी हियर, बट हाई डायमेंशन के लिए एक पूरा स्कैटर्ड हो गया है, राइट. तो ये आई थिंक इट दिस पार्ट इज क्लियर. एंड हमने ऑलरेडी पीसीए के बारे में डिस्कस कर ही लिया था. नाउ the next, equal width versus equal frequency binding. Equal width versus equal frequency binding ये क्या होता है, ठीक है. लेट मी फर्स्ट. हाँ, तो देखो, in data pre-processing, binding is a complex method that we use to reduce noise and smooth data by dividing continuous values into interval. जितने भी continuous values होता है उसको हम इंटरवल में डिवाइड करते हैं. इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, बिट्स. ये क्यों करते हैं? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द आउटलायर्स, ठीक है. इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द आउटलायर. जब भी आउटलायर्स आएगा उसका इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंटरवल में आ जाएगा, बहुत सारे इंटरवल हो जाएगा, तो दैट विल नॉट शो इफेक्ट टू ऑल द डेटा, राइट. एंड इट सिंप्लीफाइज द डेटा एंड इट improves द मॉडल परफॉर्मेंस. तो इसी को बोलते हैं हम बाइनिंग और बीनिंग, जो भी बोल सकते हो, तुम लोग बोल सकते हो. तो ये होता है एक टेक्निक that we use to reduce noise and smooth data by dividing continuous values into different intervals. And उसी interval को हम बोलते हैं bin. दो टाइप है इसका. There are two main types of binding. What are they? One is equal width binding, another is equal frequency binding. Let's come to the first one, that is equal width binding. तो इसका मीनिंग क्या होता है? इन इक्वल विथ बाइंडिंग, द एंटायर रेंज ऑफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स ऑफ इक्वल साइज. जितने भी डेटा है हम पूरा क्या पूरे सबको मतलब क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं. इक्वल इंटरवल मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल साइज में, ठीक है. सपोज 3 एलिमेंट्स लिए हो, 3 एलिमेंट्स का ऐसे आपने पूरा डिवाइड कर लिया. इसका फॉर्मूला है बीनविड्थ इज इक्वल टू maximum value minus minimum value divided by number of pins. Got it? Binwidth is equal to maximum value minus minimum value divided by number of pins. अब वेरी सिंपल है. जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका मिनिमम वैल्यू से माइनस करके जितना भी मिलेगा नंबर ऑफ पिन से डिवाइड कर दिए, वही विड्थ हो जाएगा. अब इस bin has the same range size but the number of data points in each bin may differ. ये याद रखना, number of data points in each bin may differ, ठीक है. So suppose data ranges from 0 to 100 and we want 5 bins. हम कैसे करेंगे? 100 minus 0 divided by 5, that is equal to 20.
ओके, तो बिन क्या होगा आपका? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, मतलब 20 20 20। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि 0 to 20 में जितने डेटा पॉइंट्स मिल रहा है 20 to 40 के अंदर भी उतना ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यही हम बोल रहे हैं, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन इस बिन में डिफर। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? डेटा इज skewed, most values fall into one bin, other bins may remain almost empty। अगर डेटा स्क्यूड है मतलब एक साइड डाला हुआ है, सारे एलिमेंट्स एक ही साइड में है, एक ही साइड का मतलब है कि सपोज तुम्हें 60 to 100 के रेंज में ही सारे वैल्यू मिल रहा है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ बिन में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आ जाए और कुछ में खाली रह जाए, ठीक है। सो इट डज नॉट वर्क वेल फॉर रियल वर्ल्ड स्क्यूड डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका डिसएडवांटेज या जो भी बोल सकते हो, ये जो हम इक्वल विथ विनिंग करते हैं वो इसमें this it does not work well for the real world skewed data। अब आते हैं हम इक्वल फ्रीक्वेंसी, दोनों का अंतर समझना। इसमें हमने बोला था इक्वल विथ, और इसमें हम बोल रहे हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइनिंग, ठीक है। देखो, इन इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइनिंग डेटा इज डिवाइडेड सो दैट ईच बीन contains approximately the same number of data points। जो इक्वल विथ में नहीं लिया था हमने, ठीक है, नहीं लिया था मतलब ऐसा नहीं है कि सारे बेंच में एक ही नंबर्स मिले, यहाँ पे एक ही मिलेगा। तो इन इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग data is divided so that each data bins contains approximately same number of data points। तो रेंज में भी डिफरेंट, यहाँ पे रेंज ऑब्वियसली चेंज हो सकता है, बट ईच बिन हैज इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज, करेक्ट। तो इसका एग्जांपल लो, से हमारे पास जो डाटा है 10, 12, 14, 18 up to we have considered 95, we have considered these data points। Then if we make two bins, bin 1 say 10, 12, 14, 18, 22, 20, 22, 90, 90b, so every bin is consisting of four elements, right? Four elements, so each bin has equal number of values, right? Is it clear? Of course. So what difference we have got? Equal with meaning the range matters, we keep going with the equal width, जो भी रेंज होगा मतलब सेम साइज का width लेके हम जा रहे हैं। और इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स सेम मान के जा रहे हैं, सेम लेके चल रहे हैं, और उसी हिसाब से हम बाइंडिंग कर रहे हैं। तो when size will be same width in equal width meaning, while equal frequency meaning same count, works well for an uniform well for uniform data in the case of equal width binding, and skewed data for equal frequency binding। skewed data के लिए आपका हम हमेशा कौन सा यूज करेंगे? इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जो इक्वल वेट है इसमें एम्प्टी क्रिएट हो सकता है, या तो स्क्यूड डेटा रहेगा तो ओवरलोडेड बिन्स क्रिएट हो सकते हैं। बट आपका जो इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग है इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज बैलेंस। So we can say that equal frequency is better, right? Equal frequency is better. It handles the skewed data properly, it avoids empty bins, and it ensures balanced representation, and it is useful in the real world data set। real world data set के लिए हम हमेशा maximum times equal frequency ही consider करेंगे। Example ले सकते हो equal weight के लिए, imagine dividing the salary range, most people fall into low salary bin, right? High salary bins remains almost empty, ये होता है, ठीक है। जो एवरेज सैलरी होता है वो ही मैक्सिमम रहता है, हायर सैलरी इज वेरी लेस, right? 2 to 3%। Similarly, equal frequency is group has some same number of people, better representation of population, so equal with binding divides data into fixed range interval, but it performs poorly on the skewed datasets. Equal frequency mining divides data so that each bin has equal number of points, making it more suitable for real world data processing tasks। अब आते हैं बाइंडिंग के बाद आते हैं, बाइंडिंग तो एक प्री प्रोसेसिंग टेक्निक था, अब आते हैं हम के मीन्स प्लस प्लस इनिशियलाइजेशन के।
K-means clustering depends heavily on the initial selection of the centroids. जो हम जानते हैं जितना आप K correctly put करोगे उतना ही अच्छा clustering होगा. If centroids are chosen randomly, the final clustering result may be poor. Right? So, to solve this problem, we have an improved method known as K-mean plus plus initialization. Right? It helps in selecting better starting points and improving cluster accuracy. So why K plus plus K-means plus plus needed? Because random initialization का जो problem था उसके साथ डील करने के लिए हमें बेटर इनिशियलाइजेशन टेक्निक चाहिए और केमिन प्लस प्लस वो एक इनिशियलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं राइट रैंडम इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम्स आर लाइक पोर क्लस्टरिंग क्वालिटी slow convergence may give wrong final clusters and sensitive to initial points but k-means plus plus fixes this by choosing well separated स्टार्टिंग सेंटर जो प्रॉब्लम हमें नॉर्मल के मींस क्लस्टरिंग में मिला था तो हमने क्या किया के मींस प्लस प्लस में वो हटा दिया बिकॉज इट वर्क्स ऑन carefully choosing the cluster centroids right so that this slow convergence problem can be dealt with now what is the main idea here the main idea here that points that are far away from already student centroids have higher probability of being selected. ये concept हमने use किया है. Let me highlight this. So points जब हम initial centroid select करते हैं तो we have to focus on the points that are far away from already student centroid. They have higher probability of being selected. And formula we all know that is Px is equal to d square divided by sum of all d square. And here Px is the probability of selecting point X as the next centroid and Dx is the distance from point X to the nearest already selected centroid. And this distance calculation, you have to carefully choose the matrix. Usually we select Euclidean distance matrix, but based on the data points, you may need to go for different choices. Like choices we have cosine distance matrix is one of the important one if we deal with some kind of say pixel data. So image के साथ आप deal करते हो तो you can go for cosine distance matrix. Otherwise, for normal distance calculations, in maximum cases you will find this Euclidean distance matrix. ठीक है this sum of all these points is nothing but the total squares distance of all points so points that are far away from the existing centroids have larger dx obviously data distance ज़्यादा मिलेगा हमें right then when we square it this squaring makes these far points even more likely and so further points will get higher chance of selection क्योंकि हमें वही points को consider करना था जो farthest में था जो ज़्यादा दूर में था right तो that will be selected in the next pass so this ये क्या होगा इससे क्या होगा जो centroid है that will be spread it in such a way that it will consider all the data points properly right तो ये तो प्रॉब्लम था के मींस का अभी के मींस प्लस प्लस में हमने ये चीज डील कर लिया right so if we go through the algorithm what we have done at the first step we have to choose the first centroid that we can select randomly from the dataset okay this step is same that is we are selecting one point randomly from the dataset then second what we have done so in the second step we calculate the distance of each point from the nearest selected centroid then we calculate the probability same formula d square divided by sum of d square then we go for the main important stage this is the important step we go for selecting the next centroid how by choosing the next centroid based on this probability result right then this steps will be repeated until we select the required k centroids so फिर से बोल रहा हूँ first step is same we are selecting the point randomly as first centroid
then we calculate the distance, then we compute the probability, farthest point to that particular centroid, right? And based on that probability, we go for selecting the next centroid. Let's take one numerical example. You can see here, there are 5 points, a very simple example, A, B, C, D, E. Now, what we have done, we first select one randomly, say let's select A. Now, distances are calculated. तो A से हम सारे distance हमने calculate कर लिया. Further points, जैसे कि यहाँ, just for an example, you can see here that here E is the farthest point, right? That will be having, of course, a higher probability. So E is more likely to be chosen next. तो अगर पहले हमने A चूज किया था, बट डिस्टेंस के प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट टाइम we are going to choose E. So this will help us to ensure that there is a good spread of the centroids. Now, if we go for the visual intuition, then random initialization means what centroids may be close together. अगर सेंट्रोइड क्लोज होगा तो क्या होगा, क्लस्टरिंग परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा क्योंकि सारे डेटा पॉइंट्स एक ही जगह पे आ रहे हैं आपका. सो फ्यू पॉइंट्स में बी नॉट इंक्लूडेड in the clusters, they have been left. Okay, so in that case, what we can call it is a poor clustering, right? We can call it as a poor clustering. But in the case of K-mean plus plus, the centroids are now spread apart. So that means this is going to give you a better clustering. तो ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को? वेरी गुड. तो देखो, एडवांटेजेस क्या है? बेटर क्लस्टर क्वालिटी, faster convergence, reduces randomness, more stable results, and improve accuracy of K-means. A limitation क्या हो सकता है? Can you tell me? Of course, this calculation you can see here that this part we have added extra. ये पार्ट हमने ऐड किया कि नहीं? अब जब ये पार्ट ऐड किया रहा हूं हर एक डाटा पॉइंट्स के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, right? Because this is not for one single points. Right, for all the points we are calculating this value. So this dx square divided by sum of dx square is an extra calculation here. We compare it, then that is another one, and that means computation. So it will be including slightly higher computation costs, right? But और एक चीज है कि this also depends on choosing the first centroid carefully. Means if you choose a wrong one, then obviously it cannot help you more. Okay, so it still depends on the randomness for first centroid, not perfect for all complex data set. Still, real life example in customer segmentation, random centroids may group similar customer incorrectly, but K-mean plus plus ensure that it high income customers in one group, low income customers in another, and balance and meaningful clusters. So we have seen that K-mean plus plus is an improved initialization technique for K-means clustering. It selects centroids based on the probability proportional to the square distance, ensures that far points are chosen. जो सबसे ज्यादा दूर में है वो सारे पॉइंट्स को हम चूज करते हैं. दिस लीड्स टू द बेटर क्लस्टरिंग एक्यूरेसी, फास्टर कन्वर्जेंस एंड स्टेबल just let me color a different stable results compared to the normal k-means, that is the random initialization. So this is about k-mean plus plus. Okay, I hope it is clear to you. Then we have another technique that I know that you all know, फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं, min max normalization issue.
See, in machine learning, different features in a dataset often have different scales. एग्जाम्पल के लिए मान लो एज 0 to 100, ठीक है, 100 तक ही ले रहा हूँ, उससे भी ज्यादा हो सकता है किसी का. इनकम 10,000 टू से दिस मास, हाउ मास आई हैव टेकन 10 lakhs, राइट. मार्क्स 0 to 100. तो ये देखो, इफ वी डायरेक्टली यूज दिस फीचर्स, क्या होगा? लार्ज स्केल्स वैल्यूज विल डोमिनेट द मॉडल, राइट. नाउ what we can do here in that cases where you can see different type of main scaling, uh, then we go for normalization, and min max normalization is just one such tactic. Okay. Now min max normalization का meaning है it scales all values into fixed range, usually 0 to 1. ठीक है. min max में हमें जो भी रेंज होगा वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 0. तो x minus x min divided by x max minus x min. तो ये very simple formula है, but it is very efficient one. Okay. X minus x minimum. X min means minimum value in the data set. X max means maximum value in the data set. And the x scale, that is the normalized value, that may usually fall in the range 0 and 1. So small values become closer to 0 and large values become closer to 1, and all features are put into this same scale. अब इसका प्रॉब्लम क्या है? पूछ सकते हैं कि what is the problem of min-max normalization? इंटरव्यू में you can expect a different type of question, not maybe usual questions. ठीक है. तो ये हो सकता है. बेनिफिट टू यू गॉट इट दैट डिफरेंट स्केल को एक ही रेंज पे ले आते हैं. प्रॉब्लम ये है if different species are scaled differently or not properly normalized, because distance based algorithms become biased. So मैं फिर से बोलता हूँ, if different features are scales differently or not properly normalized, then distance based algorithms become biased. Why bias happens? You know, we have some algorithm that work on the basis of the distance, like k-means, knn, and different other clustering methods. They depend on the numerical distance. Now, if one feature has a larger value, what will happen? It will dominate the distance calculation and other features become less important. So, example feature you can consider age say 0 to 100, salary say 10,000 to 10 lakh. Now, without numeration, ये हो रहा था कि salary dominate कर रहा था distance को, क्योंकि age का value कम है, and age becomes almost useless. So model gives wrong result. Now visual intuition है कि without normalization salary feature controls the clustering. With normalization age and salary contribute equally. Real life में आप देख सकते हो, age is a small scale, income is a large scale. Without normalization clusters are based on the income, but and age is ignored completely. But key problem का क्या है? Min max normalization issue occur when features are not scaled properly or different ranges are not handled correctly. तब प्रॉब्लम आ सकते हैं. दिस लीड्स टू द बायस डिस्टेंस मेजरमेंट्स. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम मतलब ये बोला गया है कि क्यों हम इसको यूज करते हैं और क्यों यूज करना चाहिए. ये जो डोमिनेट हम करते हैं आपका वो फीचर जो इसका वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, एक फीचर को जिसका वैल्यू कंपेटिवली लेस है. ठीक है. उस प्रॉब्लम के साथ इसको भी बोलते हैं बायस. bias features matlab, then in such cases we use this type of normalization technique. Now advantage क्या क्या है? It ensures fair contribution of all the features, improves the clustering accuracy, and prevents dominance of the large scale variables, sorry, and it helps convergence of algorithm.
लिमिटेशन क्या है? इट इज sensitive to outliers. If max or min changes, scaling changes completely and not ideal for highly skewed data. हाईली स्क्यूड डाटा में क्या होगा? किसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम, राइट? तो ये है। और सेकंड, आउटलायर से बहुत सेंसिटिव रहेगा ये। हम्म तो और मिक्स मैक्स मीन चेंज होने से पूरा चेंज होगा। सो मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन ऐसे तो ठीक है, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट इट हैज। एंड इसका एडवांटेज ये था कि बायस फीचर डोमिनेशन, ये प्रॉब्लम को ये डील करते हैं। So min-max normalization scales features into a fixed range, but if applied incorrectly, if features are not properly balanced, it causes bias in distance bench algorithm. Now, this makes some features dominate others, leading to incorrect clustering or prediction results. Now, let's come to the next one, that is information gain bias. In decision tree learning, we have information gain, और इसको हम यूज करते हैं to select the best feature for splitting the data, and it measures how much a feature reduces uncertainty, that is entropy. However, information gain has a serious problem. And what is that problem? We are going to discuss. It is biased towards high cardinality attributes. That means features with many unique value. So this information gain is biased towards high cardinality attributes. What is the meaning of that? Because high cardinality attributes are features that have many unique values. क्या हो सकता है? जैसे कि यूजर आईडी, transaction ID, phone number, and these features can artificially appear very useful even though if they are not meaningful. तो ये जो फीचर्स है ना, यूजर आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, फोन नंबर, ठीक है, कभी कभी जैसे कि क्या हो सकता है कि ये दिखने में ऐसा लगेगा, ये आर्टिफिशियली आपको फील होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूजुअली कभी कभी इतना नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट बायस डिसीजन, बायस सिलेक्शन के कारण इस साइड का एक्टिविटी को ये ज़्यादा फोकस करते हैं। Now, why this bias happens? Because information gain prefers splits that create many small pure groups, reduce entropy quickly. Use entropy quickly. Now, a high cardinality feature splits data into many small partitions. Each partition may contain only one or few records, and this makes entropy almost zero. ठीक है, क्योंकि सब यूनिक है, इससे क्या होगा, बहुत सारे स्मॉल पोर्शन क्रिएट होगा, और इसमें हो सकता है कोई एक या तो बहुत कम रिकॉर्ड रहेगा, और इससे एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। सो इंफॉर्मेशन गेन बिकम्स हाई आर्टिफिशियली हाई, नॉट रियली। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज वी आर प्रेडिक्टिंग वेदर ए स्टूडेंट विल पास और फेल। फीचर लिया हमने स्टडी आवर्स यूजफुल, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टडी आवर तो लिया, ठीक है, इट इज यूजफुल, स्टूडेंट आईडी इट इज यूजलेस बट यूनिक फॉर स्टूडेंट। If we use student ID, every ID creates a separate group, right? Each group becomes pure and information gain becomes very high. But ID का कोई इसमें can you say that it has some means relevance in calculating this, predicting the student's performance, that he will pass or fail? No, ID has no real predicting meaning. So problem is that information gain mistakenly thinks that more unique values is equal to better speed. यही इनका प्रॉब्लम है। But in reality, more unique values often mean overfitting. ठीक है, बट रियलिटी में आपका ज़्यादा यूनिक वैल्यूज का मतलब ओवरफिटिंग होता है। सो इससे इम्पैक्ट क्या होगा डिसीजन में, ट्री में? It becomes too complex. Tree memorizes the training data, unique values है इसको memorize करते रह जाएगा, and poor performance on new or unseen data that leads to overfitting. Visual intuition क्या होगा? Without bias, feature splits data meaningfully, but with high
cardinality bias that are split into many teeny view groups. So real life example like customer dataset, customer ID has thousands of unique values. Splitting by ID gives perfect training accuracy, but model will fail to give you real prediction, right? Because ID has no real pattern value. How to solve this? तो फिर हमें इंफॉर्मेशन गेन की जगह पे हमें कुछ दूसरा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, right? How to solve this? Use gain ratio, normalize information gain, penalizes the high cardinality features. Okay, then you need to remove id type of features, माने id type का unique type का features को आपको drop करना पड़ेगा, drop useless unique features. Then you should use regularization, limit tree complexity and prevent overfitting. So high information gain does not always mean good features. More split is not equal to better prediction. Always we have to keep a note on that. So information gain is biased toward attributes with many unique values because they artificially reduce entropy by creating many small partitions, and that may lead to overfitting. So to fix this, we have to use methods like gain ratio and feature filtering. ठीक है, नेक्स्ट हम गेन रेशियो के ऊपर डिस्कस करेंगे. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. Okay, if everything is clear, then it is okay. We'll meet in the next class. Thank you.